just reached the airports. Now I am heading towards the checking in my luggage and everything. So I have a lack of the times. I just got my boarding passes. These are the 3 boarding passes I received from here. So I am heading towards the Astana, then Almaty, then I will be heading towards the Frankfurt, Germany. So I'm going to explain you all the process. मैं आपको सारा process अब बताता हूँ कि मैं जैसे आप if you are taking first time international flight, then how to like proceed for the international check-in and the check-in of your luggage and everything. So once you arrive at the international airports, there is a security personnel at the gates, and you have to show your tickets and ID cards. If you are taking international flight, then show your passport, or if you are taking a domestic flight, just show your any identity cards which can prove that you are legally living in India. So once you got your boarding pass, just head towards your respective airlines and the counters where you will receive your boarding pass and check in your luggage and everything. Once you receive your boarding pass from the respective airline, as I am, for example, I am flying with the Air Astana, so I will receive my boarding pass from the Air Astana counters and check in my luggage over there and get tags on my cabin baggage. से वो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी एयरलाइंस का जैसे अज़रबैजान एयरलाइन है, इसका यहाँ पे चेक इन स्टार्ट है। तो आप ऐसे बहुत सारे एयरलाइंस हैं, जिस भी एयरलाइन से आप फ्लाई कर रहे हो उसका आप देख सकते हैं काउंटर पे, तो वहाँ से आप जा सकते हैं रिस्पेक्टिव एयरलाइन पे। और उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेकअप के लिए आपको आगे बढ़ना होगा। लगभग 15 से 20 मिनट, डिपेंड करता है रश कितना है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे इमिग्रेशन पे लग सकता है। इमिग्रेशन पे आपको डॉक्यूमेंट्स जनरली मांगते हैं, आपका बोर्डिंग पास, पासपोर्ट। डोमेस्टिक में फ़्लाई कर रहे हो तो कोई आइडेंटिटी कार्ड मांगेंगे और अपना बोर्डिंग पास और तो हम लोग अभी लाइक ड्यूटी फ्री शॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। काफ़ी सामान तो काफ़ी अच्छे हैं। जो तुम्हें यहाँ पे सामान लेने का ये फ़ायदा है कि जब तुम्हारा एक बार लगेज चेक इन हो जाए, उसके बाद तुम्हें जो वेट है ये वेट काउंट नहीं होता। कितना भी यहाँ से आप ड्यूटी फ्री से सामान ख़रीद सकते हैं, आपको वेट का कोई यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मतलब पे नहीं करना पड़ेगा एयरलाइन को। तो आप जितना मन करे उतना सामान ख़रीद सकते हैं। लेकिन एक डिसएडवांटेज है जो मैं बताऊँगा, यहाँ पे जो प्राइस रहते हैं, कहने को ये ड्यूटी फ्री है लेकिन ड्यूटी फ्री नाम का है सिर्फ। यहाँ पे सारे जो सामान आपको मिलेंगे मोस्टली डबल या ट्रिपल प्राइस के, जो नॉर्मली बाहर के रेट से, मार्केट रेट से डबल ट्रिपल के प्राइस के हैं। यहाँ पे तुम्हें मैकडी वगैरह, जो तुम्हारे पास कार्ड है, अगर तुम्हारे पास कार्ड है क्रेडिट कार्ड वगैरह जिस पे इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस है तुम्हें, तो वहाँ पे मेरे पीछे देख रहे हो, वहाँ पे लॉन्च पास आप जा सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं फ्री में, वो भी बिल्कुल फ्री आपके पास जब क्रेडिट कार्ड हो। क्रेडिट कार्ड नहीं है तो अब फिर भी जा सकते हैं, कैश पेमेंट करना पड़ेगा। 3-4 हज़ार के आसपास तुम्हें 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए मिल जाएगा। तुम्हें यहाँ पे क्रो में जो भी जैसे सामान ड्यूटी फ्री में लेना है, लेकिन वही मैं बताया ना भाई आपको, ड्यूटी फ्री नाम का है। यहाँ पे सारे डबल ट्रिपल के प्राइस पे आपको मिलेंगे मोस्टली सामान। तो क्रोमा भी आपको मिल जाएगा, जो जैसा आपको लेना चाहो। मेरी जो फ़्लाइट का गेट नंबर है वो 6 नंबर है। अभी यहाँ पे 1 से 26 बोर्डिंग गेट्स हैं यहाँ पे, तो मैं 6 नंबर अपनी फ़्लाइट के गेट की तरफ बढ़ रहा हूँ। और तुम्हें जैसे कोई मतलब कोई नहीं चल पा रहा है तो यहाँ पे व्हील चेयर अवेलेबल हैं, और इसके बाद ई रिक्शा भी अवेलेबल है अंदर, जो चल सकते हैं। कुछ पैसे लेंगे आपसे, डिपेंड करता है एयरलाइन की सर्विस पे कि आपने चूज़ किया है। तो जैसे आपने देखा कि मेरे पीछे एक अंकल जा रहे थे, तो उन्होंने व्हील चेयर की सर्विस अवेल की है। तो आप एयरलाइन के जब फ़्लाइट टिकट बुक करते समय आप बुक कर सकते हैं कि कोई डिसेबल बंदा है, कोई डिसेबिलिटी है किसी को, तो वो बुक कर सकता है। कि आपको जैसे कोई डिसेबिलिटी है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो आपको ऐसा व्हील चेयर या ई रिक्शा बुक कर सकते हैं। तो कुछ पैसे लेंगे आपको। आपके बोर्डिंग गेट है, वैसे बोर्डिंग गेट यहाँ 4-4 किलोमीटर दूर है। आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे घुस जाएंगे, फिर भी 4-4 किलोमीटर दूर है। तो मेरे को एक सोन पापड़ी लेनी थी अभी हल्दीराम से, सोन पापड़ी लिया, और एक थोड़ा सा एक समोसे लिए, जो रेडीमेड वाले समोसे हल्दीराम के आते हैं, तो वो समोसे मैंने लिया। मेरे को अराउंड 500 का पड़ा दोनों। ये 1 kg की सोन पापड़ी थी और आई थिंक 200 ग्राम का रेडीमेड वाला समोसे थे।
तो यहाँ पे थोड़ा महंगा है, लेकिन आप पा सकते हो। इनका जो वेट है ये फ़्लाइट में काउंट नहीं होता, एक ये एडवांटेज है। तो अपने बोर्डिंग गेट पे पहुँच जाए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। जैसे आपके लगेज में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम भी हो जाती है तो बोर्डिंग गेट पे जल्दी आए रहेंगे। तो बोर्डिंग गेट पे आपकी अनाउंसमेंट होती है कि आपके लगेज में ये प्रॉब्लम है, तो आप उसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो एटलीस्ट कम्स 1 आवर बिफोर द डिपार्चर ऑफ द फ्लाइट, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो, कुछ भी हुआ हो तो आप उसे सॉल्व आउट कर सकें। तो यही है मेरी भी। और जो बोर्डिंग गेट होते हैं जनरली बोर्डिंग गेट्स 20 मिनट पहले बंद हो जाते हैं। ओके, जस्ट अभी मैंने सारी बोर्डिंग वगैरह कंप्लीट कर ली है। अब फ़्लाइट वो लगी है, बस फ़्लाइट की तरफ अपने बढ़ रहे हैं। बोर्डिंग कंप्लीट होने में थोड़ा लाइन लंबी थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो अभी जस्ट मैंने फ़्लाइट बोर्ड कर लिया है। सो ये मेरी सीट है। This is what the food I was served, and I have chosen the vegetarian option. So this is, I think, this is simei and this butter and this some salad and some bread and juices and everything. We got the option. This is what we are being served here. We are on the. We have a flight of the almost 2 hours left more. So let's enjoy the meal. And I'm just watching this movie. I just cleared my immigration points. It was easy because I am having the European residence permit. So they didn't ask a lot of the questions to me. They just asked for my passport and the boarding pass, and another things they asked me just my residence permit that I'm flying towards the Frankfurt. So I'm going toward the domestic launch. Then I will be taking flight to the Astana. Then I will have opportunity to explore the city of the Astana. Then my boarding just got started from here, so I am just heading towards the boarding the flight right now. I just got my boarding pass from Delhi, and now I will be heading towards the Astana, and we'll have a layover of the almost 18 hours over the years. We'll be going towards the city center to explore what's there, and so I'm just going to board the flights. The people are over there to check your flight and everything over there. So let's go over there. This is another flight. I will be boardings to Astana. The people are over here. Okay, it's quite chaos over there. Let's wait. So on this flight I'm not having much wider leg space, but because it's a domestic one, but it's okay because I just have to travel a few hours journey, so it's okay to be on this one, even on this flight. यहाँ पे लाइक अब बर्फ़बारी हो रही है, लेकिन जब मैं फ़्लाइट से उतरा तो मेरे को फ़ील हुआ कि टेम्परेचर कुछ बहुत ज़्यादा ड्रॉप है टेम्परेचर में। तो अब यहाँ पे वो जो मेरा दोस्त है यहीं, वो दिल्ली से मेरे को मिला था, यहाँ लोकल है कजाकिस्तान का, तो मेरे को एकोमोडेशन ढूंढने में और सारी चीज़ों में हेल्प करेगा। तो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ, जस्ट वो मेरे को हेल्प करे, मैं एकोमोडेशन यहाँ ढूंढ लूँ। प्लान क्या है, एक नाइट यहाँ रुकने का और सिटी सेंटर घूमने का, क्योंकि मेरा नेक्स्ट फ़्लाइट है अस्ताना टू फ्रैंकफर्ट कल है। तो मैंने सोचा था, इसी हिसाब से बुक किया था कि कल मैं घूम लूँगा। तो मैं अभी थोड़ी देर में सिटी सेंटर जाएंगे, इधर टैक्सी बुक कर और जो यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे यूज़ करेंगे। और मुझे एटीएम से कुछ पैसे निकालने भी हैं, तो मैं अपना वो ऑस्ट्रिया वाला कार्ड या जर्मनी वाला कार्ड या लाटवियन कार्ड अपना यूज़ कर लूँगा। तो कजाकिस्तान, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. It has been Soviet former countries. Everywhere there is a buildings and snow everywhere. So I just got out of my taxi and I just had booked this taxi and now I need to pay him. Okay. I just had come with the taxi. Now I am heading to look at the snow around me. It's quite snowy. I just got out of the taxi and this is the,
This is 100 tenge. So the currency in the Kazakhstan is tenge. So it was some beautiful people over the years. So they just helped me out of there's the address on the other side of this building. So I just need to go on the other side. I don't know exactly, but I need a stay somewhere. There was a person who helped me out of the airports to get here, but unfortunately the address is not correct. So these two persons are helping me out of the to get hostel over here. So I don't know exactly where to. So C and his brother or something, so they are helping me out of the to get a hostel over here. जो मेरा होटल था वो थोड़ा सा उस बिल्डिंग के उस पार था, तो ये भाई बहन मेरे को मिल गए, ये मेरे को हेल्प कर रहे हैं. एक का नाम दस्तार है, एक का नाम मस्ताना है, ऐसा कुछ नाम है. तो ये मेरे को हेल्प कर रहे हैं. देखो बर्फ़ है इस समय. और दिस लेडी हैज़ बीन शोइंग मी, या इट्स क्वाइट गुड ओवर हियर. Да, хорошо. Okay, Nick. So this is the hotels we got for tonight stay. So I'm going to pay for 4,000 tenge for a one night of this stay. So say is going to make the registration and everything by taking my all the documents. So this is the lawns area, tennis area. So I will be staying. There's everything is perfect. Just I looked on the internet. I found it very interesting. Oh, cook now. Okay. So there's a kitchen too. I'm not going to cook. So this is the kitchen part I got. Yeah, да. Хорошо. Да. So I'm going to give my all documents for it to her. It's paid around 4,000 tenge for a one night of the stay in this hotel. So there's a vending machine over there, so you can get anything from here anytime just by paying by cash, or there's a card system over there. अभी जस्ट आया, एक सुपर मार्केट मिली, तो यहाँ से कुछ सामान खाने का ले लेता हूँ. मैंने ले लिया है. मैं ये मजीतो जो था ये वाला रशिया में पीता था, लेकिन ये बड़ा मस्त मजीतो है, तो ये दोनों मैंने ले लिया मोस्टली. अब चलते हैं अपने होटल की तरफ. भाई अभी देख रहा कितना ठंड हो रही है. एक दिन के लिए यहाँ पे रुका, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रुका, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं प्लान करूँगा कि यहाँ पे समर में आने का, क्योंकि विंटर में आने का कोई यहाँ पे फ़ायदा नहीं है बिल्कुल भी. बर्फ़ ही चारों तरफ है. उसके बाद -12 डिग्री टेम्परेचर जा चुका है, तो कोई आने का यहाँ पे मतलब नहीं है ठंड में. तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि समर में आए. कुछ फ्रेंड्स भी यहाँ पे बन गए हैं, उन्होंने कहा जब आप मेरे को आओ तो एक बार मैसेज कर देना, मैं आपको यहाँ पे घुमाऊँगा. मॉर्निंग्स, वेलकम बैक अगेन फ्रॉम द अलमाटी. Look at the snow. It has been since last night. So we just decided to get out of the hostel because I cannot wait for a longer period of the times because I have another flights to the Frankfurt. So I am just planning to get out of the hostel and explore the city. So this is how it looks like. It feels like I am in the Yakutsk, one of the coldest place on the earth, but it's okay to be here. Like, it's not that much cold, but I think I can tolerate because I am habitual with this severe cold when I was in the Russia. So everywhere else you can feel the cold. Look at these beautiful trees which are covered with the snow. They look so beautiful. My hand started to get froze, so I'm just going to get a shelter somewhere else, just to find a place to warm up my body because it's minus and the snow has been falling. You can't see the snow behind the falling above me, but it's full of the snow. Look at this kind of the central area. Look at these beautiful trees. They look quite beautiful. Once you shake and snow start falling down from here, it feels like I'm in the fairy tale. So somewhere in the walkings on the snow mountains, but it is just a regular city in the Kazakhstan, the capital of the Kazakhstan, Astana. So it is just the regular snow covering, nothing more, nothing less, just a regular one. So let's have, it's kind of the peace treaty or something I read on the YouTube Google.
So this is the monument. This monument has been erected for the some of the people who have, got martyred, something related to that. I'm going toward that side. It's my hands are getting frozen, and even I'm not able to speak properly because of the severe cold hitting to my mouth and tongues everywhere. This is the Kazakh Expo where I just warmed up my body and now got out of the shelter, so I'm just I will look for the place where the expo has been held. So the expo was held in 2017 in the Astana. So this is the expo area. On back of me there is a circular kind of the museum or some things where the expo and everything was there. So let's see what happens for the I'm going to find a place, and the people over here are not coming to see because of the snow. But I am the only tourist. I think I am the only tourist over here who have been walking around this for a couple of the hours and getting shelter for some times and then getting out of the city for some times to see. This is on the back of me. There is a, this is the circular shape of the structure, which is quite heavy. Like it's it would be 110 meters around. So this is, let's go ahead of this to see what further I'm going to get. There are a lot of the buildings around me where you may find different type of the things and everywhere everything's, but for me I just came to see like how it looks like. So let's walk. Look, these trees are quite beautiful. They are everywhere on the street, to the center, on the park, on the city, everywhere. So you're going to get everywhere. Look how beautiful on the back of me. The two children have been walking and they are quite dressed up. So this is how looks like. So on the back of me you can see that beautiful structure for which I have come here. So I just got that. So now I will be heading towards the Botanichesky Gardens. There's one beautiful Botanichesky Gardens. I will go toward that side. So this is how my trip to the Kazakhstan has been. So this is, I got a friend from here who helped me to click a picture from here. So now I'm heading toward the another destination, which is Botanichesky Gardens. The just on the back of me there is a river. So this river is completely frozen. So when you look on the back of me, it doesn't look like a river. It's a full it was in the summer vacation you will feel it like it's full of the waters, but right now it's completely frozen. So it doesn't look like a neither canal nor a river. So it looks like a flat snow which is completely frozen. Public transport from here to the mosque. There is a beautiful mosque over here, so I'm just going to explore that one. So this is how it looks like to be traveling on the public transport in the Kazakhstan, Astana. So it is going to just take a few minutes from here to the mosque, and then I will be heading towards airport. So the people over here are, you have a QR code, so you can't pay by the cash. You just need to have a friend or somebody who is going to help out in the payment of this. So this is the religious mosque which is one of the also beautiful tourist destination of the city. So it was on the way to airport, so I decided to also explore this beautiful mosque. So look at the snow, it's full of this snow, and the mosque is also closed. You can't go in or out anywhere. You just need to be outside. Look at the snow everywhere around me. It's completely full of this snow. Look at the mosque, how beautiful it is looking. You can't feel from the where you are right now watching. After coming, you can beautifully watch this one. I am not able to speak properly due to severe cold hitting my head and mouth, and it became little bit
blackish on my face, and look at my nose, it became completely reddish, and my lips are completely, cracking. Just got into my taxi. It's 4 minutes ride from right now, because I went to explore the mosque. There is a beautiful mosque there, so I just went to explore there. I just got my luggage, everything. So look at the beautiful. Reached my airport. Now I took my bag. Possible also. So I got out of my taxi. I'm now towards the international terminals. I will be heading. So this is the airport, Nur Sultan Airport. So let me go towards the international terminals, from where I will be going towards the security checkup, and then we'll clear. Flight is waiting for us. I'm just going to board my flight. It's over there. So I just boarded in the flights. Now the flight is about to take off from the runway. So the flight is completely full of the passengers. So it is going to take around 5 or 10 minutes to take off from the runway. So this is how it looks outside. The weather is started to depart from the runway, and it's going to take a few seconds from the taking off the runway. So we got to go from here after spending 17 hours of the layover over here. So I explored some of the tourist destination in the Astana. So next time I will be back, or most probably in the summer season. That would be much more better for me.